US President Donald Trump has claimed that Pakistan is among several nations actively testing nuclear weapons. In an interview, Trump said that Russia, China, North Korea and Pakistan were all conducting nuclear tests while the US had held back for over 3 decades. He said, and I quote, "Russia is testing and China is testing, but they don't talk about it. We're an open society. We talk about it because you people report on it. They don't have reporters writing about it. We're going to test because they test, and certainly North Korea has been testing. Pakistan's been testing," unquote. Trump defended his administration's controversial decision to resume US nuclear testing after more than 30 years, saying that it was necessary to ensure the reliability and readiness of America's weapons systems. The last US nuclear explosion took place in 1992, but Trump's comments have reignited the debate over global arms control treaties and strategic stability. Confusion erupted after Trump first made the announcement on social media just minutes before his scheduled meeting with China's President Xi Jinping in South Korea. However, in a late-night clarifications, US Energy Secretary Chris Wright said that discussions were about non-critical system tests, not full-scale nuclear detonations. The claim has sparked intense diplomatic buzz, with Washington's allies and intelligence community now closely monitoring the situation as Trump's words once again blur the line between political rhetoric and global alarm. Stunning comments coming in from US President Donald Trump, who has claimed that Pakistan among several nations currently which are actively testing nuclear weapons. Speaking in an interview, he said that everybody is testing except the US, which he claimed has held back over 3 decades. He said Russia is testing, China is testing, just that they don't talk about it and they don't have reporters reporting about it. And in the same breath, he also said Pakistan has been testing. And he went on to defend his administration's decision to resume nuclear testing in the US after 30 years, the last one being in the year 1992. Now, Trump's comments have reignited the debate over global arms control treaties and strategic stability, and confusion is been erupting ever since Trump first made the announcement on social media, and that announcement coming in minutes before his meeting with China's President Xi Jinping. Now, when asked to comment on US President Donald Trump's claim that China is secretly testing nuclear weapons, China's Foreign Ministry spokesperson Mao Ning has said that as a permanent member of the UN Security Council and responsible nuclear weapons state, China is committed to peaceful development. She stressed that China adheres to a policy of no first use of nuclear weapons. It maintains a self-defensive nuclear strategy and has strictly honored its commitment to a moratorium on nuclear testing. That's the word coming in from China's Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, when asked to comment on US President Donald Trump's claim that China is secretly testing nuclear weapons. China stressing that China is sticking to a no first use policy when it comes to nuclear weapons. And it has said that it has strictly honored its commitment to the moratorium on nuclear testing. US President Donald Trump once again openly showed his dislike for Democratic candidate for New York City mayor poll Zohran Mamdani. In an interview with the CBS, Trump reiterated his claim that NYC leader is a communist and turned down the arguments of him being compared with Mamdani. Correcting the interviewer, Trump said that
Zohran Mamdani is a communist, not a socialist, and he is far worse than a socialist. The remarks come just a day before New Yorkers head to the polls on Tuesday, the 4th of November, to elect their next mayor. Mamdani, who has described himself as a democratic socialist, is leading the race and could become the first Muslim mayor in the United States of America. Trump, once again, after his public comments on camera, has once again openly showed his dislike for Zohran Mamdani, the frontrunner to become the next mayor of New York City. Trump reiterating his claim that Zohran Mamdani is a communist and that he is far worse than a socialist. Tragic road accident in the Harmada area of Jaipur in Rajasthan. 13 people lost their lives and more than 18 have been injured. This after an out-of-control dumper hit a car at high speed. After the collision, the dumper overturned on 3 other vehicles, causing a massive pile-up involving more than 10 vehicles. Many people were trapped inside these vehicles after the crash. Police and rescue teams quickly reached the spot and started relief and rescue operations. The main road has been closed and traffic has been diverted to other routes to clear the area. Rajasthan's Chief Minister Bhajanlal Sharma expressed deep sorrow over the incident. He directed officials to ensure that the injured receive immediate and proper medical treatment. Authorities are still working at the scene and further details are awaited as rescue operations continue. Tragic road accident in Jaipur in Rajasthan. 13 people losing their lives. Latest visuals of the aftermath of the crash that involved more than 10 vehicles. An out-of-control dumper truck hitting a car and overturning 3 more vehicles. And that resulted in a pile-up involving more than 10 vehicles. The rescue operations are going on as many people are feared trapped inside the pile-up of these vehicles. We have my colleague Dhwaj Arya joins us on the phone line from the accident spot. Dhwaj Arya जी बताइए लेटेस्ट तमाम खबरें क्या मिल रहे हैं स्पॉट से. हमें अभी तक की जानकारी है कि 13 लोग घायल हो चुके हैं. बिल्कुल देखिए, आज दोपहर 1 बजे के करीब ये हादसा हुआ है. जयपुर के हरमाड़ा इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है और ये मैं दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे ट्रोला, यानी कि ये जो ट्रोला है मौत का ट्रोला. आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो ट्रोला है ये मौत बनकर जो है जयपुर की शहर की जो सड़कें हैं वहाँ पर घूमा. 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इस ट्रोले की हालत देखिए कि इसका जो टायर है वो किस तरीके से जो है डैमेज हो चुका है. और आगे की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी हेमंत जो है पूरी तरीके से दिखाएंगे कि ये कितना मजबूत जो है ट्रोला होता है. और उसके बाद में अय्या देखिए, आप इसकी हालत देखिए किस तरीके से जो है इस ट्रोले की हालत है. इसने 30 से ज़्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. 18 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से घायल हैं. ये तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जो ट्रोले ने जिस तरीके से टक्करें मारी थी, क्योंकि ये देखिए ये बाइक है, एक बाइक ये है, दूसरी बाइक वो है. इस बाइक की हालत देखिए कि ट्रोला इस बाइक को पूरी तरीके से कुचलता हुआ यानी कि आगे से निकल गया. इस बाइक के पार्ट आप देख सकते हैं कि पार्ट अलग हो चुके. ये देखिए, ये दूसरी जो बाइक है इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका इंजन जो है पूरी तरीके से अलग हो गया है. ये जो है तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा. और इस हादसे में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, ये आप देख सकते हैं एक कार को भी टक्कर मारी थी. ये वो कार है और ट्रोला इस कार को टक्कर मारते हुए निकल गया. यानी कि इस कार का ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से टक्कर मारी हैं. और देखिए आप, ये तस्वीरें बताती है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा. जानकारी यही निकल कर आ रही है. 30 से ज़्यादा गाड़ियों
जो है टक्कर मारी गई थी। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से इस गाड़ी की जो हालत है, इस कार की जो हालत है, ये हादसा कितना भयावह रहा होगा। और ये हादसा जो है पूरी तरीके से बताता है कि राजधानी जयपुर की सड़कों पर ये मौत बनकर जो ट्रोला जो निकला है, ये आप देख सकते हैं। ट्रोले को दोबारा से मैं दिखाना चाहूँगा। Dvajarya there getting us that latest update from the accident spot in Harmada area of Jaipur in Rajasthan, where a speeding dumper truck rammed into a car and then overturned 3 more vehicles, resulting in the pileup of more than 10 vehicles. 13 people have lost their lives is what we understand. 18 more are injured. ध्वजार्य जी, चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी भी इस घटना के बारे में ही इज एक्सप्रेस्ड हिज डीप सॉरो। उन्होंने भी ऑफिशियल्स को कहा गया है कि जो इंजर्ड जो है, जो 18 लोग जो अभी तक हमें जानकारी के 18 लोग इंजर्ड है इस एक्सीडेंट में, उनको सही तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। बिल्कुल, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर जो है शोक जताया है और उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो इंजर्ड लोग हैं उनका इलाज करने के लिए जो है पूरी तरीके से ताकीद किया है। और तमाम यानी कि 2 हॉस्पिटल हैं, जयपुर का कांवटिया हॉस्पिटल है और SMS अस्पताल है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं आसपास के इलाकों को, उनको भी ये कहा गया है कि अगर वहाँ कोई पेशेंट अगर एडमिट है, अगर कोई भी जो दुर्घटना में एडमिट है, उसका पूरी तरीके से इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इलाज जो है पूरी तरीके से किया जाएगा और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो राजस्थान की सरकार उन पीड़ितों के साथ है, कोई भी जो पैसा है उनसे नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी बात है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी तरीके से जो है शोक जताया है। लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी है कि जयपुर शहर के बीचों बीच ये जो ट्रक है, ये मौत का ट्रक बनकर घूमता रहा। इस ट्रक के पीछे आप देखिए एक लाइन में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। यानी कि इस ट्रक के पीछे भी लाइन है और ट्रक का ड्राइवर है वो शराब के नशे में बताया जा रहा था। इसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। ब्रेक फेल हुए हैं। आधे किलोमीटर तक जो गाड़ियों को रौंदा है और आधे किलोमीटर तक गाड़ियों को रौंदते हुए जी ये जो ट्रक निकला है, ये बड़ी घटना हुई है उसके बाद में। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप ये घटना के बारे में जानकारी, अच्छा आपके बारे में जी देखिए, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग अब यहाँ पर इस ट्रक को देखने आ रहे हैं कि मौत का जो ट्रक है, यानी कि मौत का गोला बनकर ये ट्रक ड्राइवर जो था, हालांकि ट्रक ड्राइवर अभी फरार बताया जा रहा है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और पुलिस कमिश्नर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये माना है कि पूरी तरीके से ये जो ट्रक ड्राइवर है शराब के नशे में था। ये बात भी उन्होंने मानी है। यानी कि आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि राजधानी जयपुर में कितना बड़ा हादसा हुआ है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि SMS अस्पताल में जो घायल भर्ती हैं उनकी हालत भी काफ़ी गंभीर है। मौत का आंकड़ा और भी ज़्यादा जो है बढ़ सकता है। जी। Now, the National Forensic Science Laboratory, or NFSL, in Gandhinagar has informed the Supreme Court of India that the audio exhibits in the case related to recordings allegedly linking Biren Singh to the ethnic violence in Manipur were tampered with. The report also states that the audio is not scientifically fit for voice comparison. The FSL, or the Forensic Science Laboratory report, states that no opinion on similarity or dissimilarity of the speakers could be offered because of the tampering. The finding came during the hearing of a plea seeking a court-monitored investigation into the audio clips which purportedly relate to the ethnic violence that erupted in Manipur. A bench of Justice Sanjay Kumar and Justice Alok Aradhe was considering the matter on Monday, and the court, after perusing the sealed cover report submitted by the Forensic Science Lab, directed that its final report to be furnished to the parties and listed the case for further hearing on the 8th of December. Meanwhile, the Supreme Court of India has refused to entertain a plea seeking a ban on social media use by children between the ages of 14 and 18. The petitioner argued that since the COVID-19 pandemic, children have become glued to mobile phones, and unlike countries like Australia, China, and the ones in Europe and the Arab world, India has no restrictions. Chief Justice B.R. Gavai responded sharply and asked, and I quote here, "Do you know what happened when Nepal tried to ban social media?" The court made it clear that this is a matter of government policy, not something for the judiciary to decide.
Keeping it with the Supreme Court, which has vowed an iron-handed action against digital arrest scams. The Supreme Court has expressed deep shock after being informed that nearly 3,000 crore rupees have been extorted from people through cyber frauds, particularly digital arrest scams. A bench of Justices Suryakant and Joymalia Bagchi said that the situation demanded harsh and stringent orders to curb the growing menace. The court remarked that it's shocking that more than 3,000 crore rupees has been collected from the victims, and remarked, and I quote here, "If we don't act firmly, the problem will only magnify. We will deal with this with iron hands," unquote. The Apex Court was hearing a suo motu case it had taken up to address the alarming rise in such digital arrest scams. In the previous hearing, the court had directed all states to submit details of FIRs registered in connection with digital arrest frauds and had questioned whether the CBI had adequate resources to handle the nationwide cases. The Ministry of Home Affairs and the CBI submitted a sealed cover report. Solicitor General Tushar Mehta informed the bench that a dedicated unit within the Ministry of Home Affairs was coordinating efforts to tackle these crimes. After a brief hearing, the court said that appropriate directions will be issued and listed the matter for hearing on the 10th of November. The case originated from a letter written by a senior citizen couple who were duped of 1.5 crore rupees between the 1st of September and the 16th. The fraudsters, posing as officials of the CBI, Intelligence Bureau, and even the judiciary, allegedly used video calls and forged Supreme Court orders to extort money under these threats of arrest. 2 FIRs were later registered with the Ambala Cybercrime Branch, exposing an organized racket targeting senior citizens. Taking note of several similar media reports, the Supreme Court on the 17th of October had sought responses from the central government and the CBI and requested the Attorney General's assistance in the matter. The filing of nominations for the MCD by-elections in Delhi has begun today. Mayor Raja Iqbal Singh of the BJP says that the party is fully prepared and connected with the people on the ground. Speaking exclusively to News 9, he expressed confidence of an outstanding performance across all 12 seats, citing that the corporation's visible progress is known to all. Today. To talk on this, we have MCD Mayor Raja Iqbal Singh here on News 9. So nomination has already begun. When are we expecting that BJP candidate would be filing nomination? हमारी पार्टी ने अपना जो प्रोसेस सिस्टम है चालू कर दिया है सभी ज़िलों के अंदर जहाँ जहाँ पर इलेक्शन है। हमारे जो सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, रायशुमारी हो रही है और साथ में एरिया के लोगों से भी पूछा जा रहा है कि कौन सा सूटेबल जो कैंडिडेट रहेगा। पार्टी के सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपने आप में कॉम्पिटेंट हैं। जो भी प्रोसेस पूरे होने पे इसकी अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाएगी। अभी लास्ट डेट 10 तारीख है। पार्टी पूर्ण तौर पर तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता, पार्टी पूरी जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, 24/7 काम करने वाले लोग हैं, तो हमें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। Delhi government along with MCD both are in the hands of BJP. So what are you expecting on these 12 seats? तो वी आर एक्सपेक्टिंग 100% रिजल्ट, क्योंकि हम जनता के साथ हैं, जनता के बीच में रहते हैं। दिल्ली सरकार की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी इतना बढ़िया बेहतरीन काम करते हैं, दिल्ली की जनता की चिंता करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। वहीं पर निगम भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, तो जनता देख रही है और आने वाले समय में आपको इसका आउटकम नजर आएगा। What are going to be the top 3 agenda for this by-election? देखो हमारा जो एजेंडा रहा कि उसमें साफ़ सफाई है। आप देखिए कूड़े के पहाड़ों की हमने बात की थी, उनकी हाइट लगभग आधे से कम हो गई है। और हमारा दूसरा यमुना का था, यमुना आपने देखा यमुना साफ़ हो गई है। तीसरा हमारा जो एजेंडा था उसमें करप्शन फ्री ज़ीरो टॉलरेंस था। और दिल्ली के अंदर आप निगम के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर अब बहुत ही आप समझिए बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो तीनों एजेंडे लेकर हम जाएंगे।